Okay, I think everyone knows Excel. At least you have heard of Excel, right? So Excel, as you know, it's a Microsoft's tool. Okay, so it's part of Microsoft Office package. Correct. So most widely used software for creating, organizing, and manipulating numerical and textual data in tabular form. In Excel also, we store the data in tabular format. Okay, in Excel also, we store the data in tabular format. Just okay. So it's not giving. Just a minute, please. Okay. Similarly, like in database, we store the data in tabular format. In Excel also, we store the data in tabular format. That is rows and columns. Correct. This is also called as grid structure. Okay, or tabular structure. So this horizontal rows are called. This is called rows. Basically, rows are horizontally oriented. Vertical orientation. This is called columns. Columns or fields. So rows or tuples, TUPLES, tuples are called. Okay. So most widely used software for small to mid level organizations, they maintain their data in Excel. Okay. Even for organization like MNCs like Accenture, TCS, and all these companies, they also use Excel for reporting, basic level reporting. Okay. If when you have more number of data, then you may not opt for Excel. You can use advanced tools like database, all this we can use. But for small companies or small to mid-level companies to maintain, let's say they want to maintain the payroll, they want to maintain the accounts, they want to maintain the logistics part. Okay, they can Excel is sufficient for them. Okay, Excel is commonly used to organize data, perform calculations, create charts and graphs. In Excel also, we can create graphs, charts, and all that. Okay, but that very limited. Okay, you cannot compare this with Power BI, but it has the provision to create charts, graphs, so on and so forth. Okay, so Excel is part of MS Office suite, Microsoft Office suite, and which also includes programs like Word, PowerPoint, Outlook. Okay, so MS Office now I'm using 2021. Okay, the latest one is advanced one is 365. Okay, for this you have to pay some amount, maybe 600 per month. And this license can be shared by 4 to 6 members. But if you have Excel, which is, I mean, MS Office, which is greater than 2010, that is enough. Most of the concepts you can practice here. Okay, if you don't have that, you can practice MS Office online. Online में भी आप practice कर सकते हो. ठीक है? Clear? So it helps you work with numbers, text in tables. Okay, table rep, we can either have numbers or text. We can write formulas. We can write functions. Each and everything we will see step by step. Okay, so why Excel is so popular? Because so Excel uses a grid-like interface. I have already told you, row column means it's a grid-like interface to organize data in rows and columns. Okay, so formulas and functions. Excel lets you perform calculations and data manipulations using formulas and pre-built functions. So what is a formula and function? I'll tell you. But before that, see. So formula means suppose I'm writing, okay, I'm trying to add three numbers. Let's say 10 plus 20 plus 30. Okay, I should always start with the equals to sign in Excel. Okay, suppose this is Excel cell. Okay, it also Excel the cell. If I want to calculate, I will write 10 plus 20 plus 30. Okay, when you press enter, it will give you the addition. Basically, it will give you the 60. Mhm.
To write a formula, it is compulsory that you must use equals or you can use a plus. Okay. So mostly 90% of the time you'll be using equals to. Equals to means I'll show you how to use this. I will tell you. Okay. By using Excel, you can perform data analysis. Okay. Excel offers tools like sorting, filtering, pivot tables, and what if analysis to understand data better. We can analyze the data in Excel also by using lot of functions and formulas. Okay. Data visualization we can do. Okay. Charts we can create, reports we can create, dashboards we can create, everything we can create. So data import and export. Data import and export means you can import data from other sources also. If your data is there in Notepad, okay. If your data is there in CSV file, CSV, if your data is there in XML file, some other sources your data is present. If you want to suppose मुझे analyze करना है, so I can pull that data from other sources, okay, analyze it. Okay, data source means there are various systems, like there are like systems like, let's say you have cloud which stores data, you have Oracle database which stores the data, you have MS SQL which stores data. Okay, AWS cloud, Azure cloud, Google cloud, there are so many 100+ sources. SAP system also stores data. Okay, so there are hundreds of sources you can store the data, but if you want to import that data into Excel for analysis, you can, Excel also provide that facility where you can import data. आप डेटा इंपोर्ट करके एनालाइज कर सकते हो, दूसरे सोर्स में कुछ डेटा रहेगा, दैट वी विल सी. मैं खाली हाई लेवल पे बता रहा हूँ, बट आगे जाके हम लोग देखेंगे. कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग. कोलैबोरेशन शेयरिंग मतलब एक टीम में हम लोग ना मल्टीपल एक्सेल यूज करेंगे तो फिर इट विल बी वेरी टफ टास्क टू एंड ऑफ द डे जाके मर्ज करना है, फिर एनालाइज करना है, बहुत टाइम लगेगा, राइट. सो एक्सेल में वो कोलैबोरेशन शेयरिंग है, सो दैट एक फाइल को हम मतलब सब एवरीवन कैन यूज दैट सेम फाइल एंड अपडेट दैट सेम फाइल, सो दैट क्या होता है कि तो इजीली ट्रैक हो सकता है और टाइम भी बचेगा. ओके, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और कोई कुछ भी काम कर रहा है वो अपना अपडेट करता जाएगा. ठीक है, कोलैबोरेशन शेयरिंग. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, Excel allows multiple users to work on same spreadsheet simultaneously, making collaboration easier. Then there is something called macros and automation. So macros and automation मैं बताता हूँ अभी आप. So macros and automation मतलब, let's say, so Kala Mandir head office is located in, main branch is located in Bhubaneswar, but it has 20 branches in Odisha. Okay. So here also, let's say, in some, this is Sambalpur, this is Raurkela, Balesur, Bhadrak. Okay, different location, B, location C, location D. So each and every location I am doing sales, right? But end of the day, I need to send the report back to my head office, right? So what is the total transactions, number of transactions, whatever I have done, okay, I have to send it. Maybe that's in Excel file 1, Excel file 2, file 3, maybe 20 files. Okay, so different branches need to send to main branch. Once this files has been sent, there is a person who can analyze. We can actually merge all the data and put it in a single file. Then he starts analyzing and prepares a report and gives it to management. Okay, so this is the total full day analysis करके will share. Okay, in that case, it is a daily task. Okay, 2 hours or maybe more than that. If the files are more, the task will be the work hour will be increased, maybe 4 hours. ठीक है, ये डेली बेसिस पे काम होगा. अगर आप एक्सेल में एक फीचर है एक्सेल मैक्रो, आपने सुना होगा. एक्सेल मैक्रो कोई सुना है? एक्सेल मैक्रो VBA. ओके, एक्सेल मैक्रो बोलते हैं, VBA बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस. इसके बैकग्राउंड में VBA करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट्स ए इजी वन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन. ये VBA लैंग्वेज लिख के हम लोग पूरा ये जो प्रोसीजर है, पूरा ये जो सारे स्टेप्स है, हम ऑटोमेट कर सकते हैं. ऑटोमेट कर देंगे मतलब एक बार ये सारे फाइल्स एक फोल्डर पे आ गया, एक लोकेशन पे डंप हो गया, देन VBA कोड आप रन कर सकते हो, विच विल बी पिकिंग डेटा फ्रॉम ऑल द शीट्स
एंड इट विल मर्ज इट इन वन फाइल ऑटोमेटिकली। जो जो डेटा क्लीनिंग रहेगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, वो सबको परफॉर्म करके उसके बाद रिपोर्ट्स क्रिएट करके मेल भी भेज देगा, जो मतलब रिलेवेंट पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज को मैनेजमेंट को मेल भेज देगा कि सी दिस इज द स्टेटस। बाय लेट्स से मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे हमेशा मतलब हर रोज 9:30 PM को मेल ट्रिगर आ जाना चाहिए कि मैं, मेरा जो बिग बॉस है, मैं उसको दिखा सकूं कि क्या हुआ है। तो ये सारे स्टेप बाय यूजिंग वीबीए आप कर सकते हो। वीबीए इज नॉट वेरी, मतलब वीबीए आप जब आप रियल टाइम में काम करोगे, थोड़ा बहुत वीबीए का काम करना पड़ सकता है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, नॉट दैट विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम नॉट टॉकिंग अबाउट। एक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन जो एक्सेल के बैकग्राउंड में वो कोड जनरेट करते हैं। नाउ दिस वीबीए थोड़ा बहुत आपको पता है तो अच्छा है, लेकिन वीबीए डेवलपर का भी जॉब निकलता है। मतलब देर आर पीपल हु एक्सटेंसिवली वर्क ऑन दिस प्रोफाइल ऑल्सो। ये पूरा अलग करियर पाथ, जैसे मतलब आप खुद को पूरा कोडिंग लेवल पे पूरा एक्सपर्ट बनाना है, यू कैन बिकम ए वीबीए डेवलपर ऑल्सो। ठीक है। बट मैंने जब मैं काम कर रहा था, ऐसे ही रैंडमली रिक्वायरमेंट आता था कि मैनेजर बोलता था कि चलो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मोनोटोनस, रिपीट हो रहा है, कैन यू ट्राई टू ऑटोमेट इट, ये कर सकते हो क्या, अचीवेबल है क्या। मैं ट्राई करता था, हो जाता था, तो ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, जस्ट चेक इट, बिकॉज किसी को नहीं पता था। तो मैं ही जो बोलूंगा कि मैं अगर बोलूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो बोलेंगे कि हाँ जेना ने बोल दिया, सो नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा होगा, तो फिर भाई करके दे। ठीक है। तो कभी कभार रैंडम रिक्वायरमेंट आता है, वो मैनेजर ऑल ऑफ मैनेजर भी नहीं, पूरा एमडी बोले हाँ कैन यू, देर इज ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑन बीबीए, सो क्लाइंट इज सेइंग दे वांट टू ऑटोमेट दिस, ये बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, कैन यू ट्राई टू ऑटोमेट दिस। तो फिर हम लोग ये ऑटोमेट वगैरह कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम आइडियाज, मतलब कैसे काम करते हैं इस पे, बीपीए पे भी आइडिया दूंगा। ठीक है। So that is called macros and automation. So guys, online clear? Any questions you have? हाँ हाँ हाँ। एक्सेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक्सेल इज वेरी पावरफुल। चलो एक्सेल को लॉन्च कैसे करते हैं, एक्सेल को सबको पता है, एक्सेल को लॉन्च कैसे करना है। यहाँ पे चले जाओ, आपको वैसे भी एक्सेल दिख जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दो, एक्सेल आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो या ओपन पे क्लिक करो। ठीक है। एक्सेल इज लॉन्च्ड, ब्लैंक वर्कबुक आ गया एक्सेल। ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, विंडो, जो कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करना है, विंडो आर। ठीक है। ये रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे यू हैव टू राइट EXCEL, एक्सेल। चलो, ये भी लॉन्च कर देगा एक्सेल। विंडो आर प्रेस करोगे तो लॉन्च रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हियर यू कैन ऑल्सो लॉन्च एक्सेल। ठीक है। विंडो आर, विंडो आर में हम लोग बहुत कुछ, जैसे मुझे वर्ड ओपन करना है, मैं विंडो आर करके यहाँ पे लिखना पड़ता है विन वर्ड, WORD। ठीक है। मुझे अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, विंडो आर प्रेस करूंगा, CMD, इसका कोई जरूरत नहीं होगा, बट यहाँ से भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग ये फाइल को सेव कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वन ड्राइव में सेव कर सकते हो, नहीं तो लोकली, पहले अभी लोकली ही सेव करो। ठीक है। सेव करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट वन ड्राइव ले रहा है, क्लाउड लोकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज स्पेस है वहां पे सेव करेगा। मैं मोर ऑप्शन में जाऊंगा, ओके, ब्राउज करूंगा, जैसे June 25, मैंने यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दिया, डे 1।
ठीक है। सो ये जो है day1.xlsx आ रहा है, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये बताता नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दो बैच पहले, मतलब लास्ट ईयर एक बैच आया था, ठीक है, उसमें दो एमसीए स्टूडेंट थे, उनको पता नहीं था इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है। सो एवरी फाइल which you store in the system will have a primary name and will have an extension name. Extension name से ही हम लोग को पता चलता है, जैसे MP3 मतलब ऑडियो फाइल है, MP4 VOB। हाँ, तो ये वैसे ही XLS। एक्चुअली जब एक्सेल 2003 था, 2003 जब था, तब एक्सेल का जो एक्सटेंशन XLS था। ठीक है। अभी 2003 के बाद जितने सारा आ रहा है, तो .XLSX आ रहा है। ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, सपोज आप सोचो, एक सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर्म, एक एप्लीकेशन है, जो कोई भी एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है, ही हैज टू एक्चुअली ओपन एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर्म, वहां पे सारे डिटेल्स दे सकता है, नहीं तो एक एक्सेल में सारे डिटेल्स भरेगा, पर्सनल डिटेल्स, उसका एजुकेशन हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसका पर्सनल डिटेल्स जो भी है, सारे डिटेल्स भर के, पैन नंबर, आधार नंबर, सारे डिटेल्स भर के यहाँ पे आइदर वो फॉर्म में भर सकता है, ठीक है, एक फॉर्म होगा, नहीं तो यहाँ पे एक अपलोड फाइल है, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में ये यहाँ पे लिखा होगा ब्राउज, ये ब्राउज करेगा, अपलोड फाइल में ब्राउज कर सकता है, नहीं तो मैन्युअली भर सकता है। ब्राउज अगर करेगा, मैं एक्सेल स्टैंडर्ड फॉर्मेट दूंगा, एक्सेल में भर के यहाँ पे ब्राउज करते, वी विल कैप्चर ऑल योर डिटेल्स। ठीक है। बट अभी दिस सेम थिंग हैपेंड विथ मी, जब मैं टेक महिंद्रा का एक फॉर्म भर रहा था मेरा ज्वाइनिंग के टाइम पे, मेरे पास ये वाला एक्सेल, ये फाइल था। ओके। फॉर्म .XLSX, मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे डिटेल्स भर दिया। सारे डिटेल्स भर के जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड, दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस एप्लीकेशन। क्यों नॉट सपोर्टेड आ रहा है? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, ये 2001 में डेवलप हुआ था। 2001 में जब डेवलप हुआ था, तब पुराना एक्सेल था, मतलब ये वाला एक्सेल था, तो एक्सटेंशन था .XLS। जब मैं इसको 2013 या 14 में अपलोड कर रहा हूं, मेरे पास ये वाला फाइल है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है नया, क्योंकि सी, दिस इज समथिंग विच विल बी, ये एप्लीकेशन इंटरनली ही यूज होता है, ये एप्लीकेशन को ना कोई क्लाइंट यूज कर रहा है, ना कोई कस्टमर, वट, कोई आउटसाइडर्स यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल पार्टी कोई यूज नहीं कर रहा है। खाली जो टेक महिंद्रा ज्वाइन करेगा, दे विल बी यूजिंग दिस एप्लीकेशन टू अपलोड देयर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, या उनका पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सारे डिटेल्स अपलोड करेंगे। बट नाउ दिस इज नॉट सपोर्टिंग। तो फिर मैंने क्या किया, ये फाइल क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, मैंने ये जो फाइल मेरे पास था form.xls, मैं इसको चेंज कर दिया, मतलब XLS, पुराने वर्जन में चेंज कर, जब मैं अपलोड किया, हो गया अपलोड। तो मतलब इन लोगों ने टाइम टू टाइम इसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि अपडेट क्यों करेंगे, बोलेंगे लिमिटेड लोग ही है, तो क्यों करना है, चल रहा है, चल रहा है। मैं अगर अपलोड करूंगा, देयर इज ऑलवेज ए कॉस्ट इन्वॉल्व, कोई इंजीनियर को बिठाऊंगा 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, सो उसका एफर्ट, फिर पैसा भी लगेगा ना। तो इसीलिए एक्सेल में प्रोविजन है, तुम ये करंट फाइल को भी, ये आज कुछ कर रहे हो, उसको लेके पुराना वर्जन में भी सेव कर सकते हो, बेसिकली ये फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं पता नहीं। मतलब अगर इवन इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आगे जा रहे हो, पुरानी चीजों को सपोर्ट करो। ठीक है। सपोज अभी एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन है सम, सम करने के लिए सम है, ठीक है, और एक फंक्शन आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल सम इफ आ गया, फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट, वी कैन नॉट कंपेयर, ये दोनों फंक्शन का काम ही अलग है, कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। मैं सम, एक सम डेवलप हुआ है और एक सम इफ डेवलप हुआ है, मतलब कोई अगर सम यूज ना करके, इट इज, ये 2005 का फंक्शन है, जब एक्सेल नया आया तो 2000, लेट्स से 2017 का ये फंक्शन है। तो इसमें आप जो काम कर रहे हो, इसमें सेम टू सेम काम कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, ये सम का भी काम करेगा, कुछ एडवांस काम भी करेगा। बट सब लोग पूछेंगे सर, व्हेन सम इफ इज इंट्रोड्यूस, आप क्यों ये फाइल को, ये जो पुराना फंक्शन है, इसको उड़ा देना चाहिए, ऑब्सोलेट हो जाना चाहिए।
ये एक्सेल में नहीं दिखना चाहिए बिकॉज वी हैव ए लेटेस्ट फंक्शन सम इफ, करेक्ट? आई यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अगर ये जो अगर आप ये बोल रहे हो ये लेटेस्ट फंक्शन है, तो आप इसको पुराने फंक्शन को उड़ाओ ना, सिस्टम से क्यों रखे हो? द प्रॉब्लम इज दैट आप सोचो 20 साल 25 साल पहले जो एप्लीकेशन डेवलप हो गया होगा वो तो सम में यूज कर रहे होंगे। तो अगर मैं सम इफ कर दूंगा उनका उनका वो अटक जाएंगे, उनका काम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सारा कैलकुलेशन बैठा हुआ है एक्सेल में दैट इज यूजिंग सम। नाउ यू बिकॉज ऑफ सम इफ आप सब कुछ उड़ा रहे हो। वो लोग अगर नया वर्जन पे माइग्रेट हो जाएंगे, सो दे आर यूजिंग 2005 एक्सेल, उनका फाइल वो ओपन करेंगे 2021 में, अभी उनका फंक्शन कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने उड़ा दिया है। तो इसीलिए पुराना फंक्शन भी रखते हैं। इवन इफ यू विल फाइंड सम फंक्शंस दोनों में काम कर रहा है, आपको करना ही पड़ेगा उसमें। आप यूज करो ना लेटेस्ट वर्जन, आपको कौन मना करता है? फॉर द न्यू वर्क यू कैन यूज सम इफ, बट ओल्ड जो है वो सम में। अगर वो टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे तो बढ़िया है, कंपेटेबल हो जाएगा आगे जाके। नहीं करेंगे तो चलना चाहिए बस। ओके, सो ऑनलाइन इज एवरीवन एबल टू फॉलो? सबको समझ में आ रहा है? यस, नो? ओके, सो देखो, सो day1.xls xlsx ये एक हो गया। अगर मैं उसको ना इसको अगर पुराने वर्जन में सेव करूं तो फाइल, सेव एज, ब्राउज, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं डे टू लिखा मैंने, डे 2। यहाँ पे देखो सेव एज टाइप, यहाँ पे देख रहे हो ये सेम फाइल को मैं पुराने 2003 एम एस ऑफिस और एम एस एक्सेल वर्जन में सेव कर रहा हूँ। तो एक्सटेंशन चेंज हो गया, XLS, जो दो अलग अलग फाइल हो गया। ठीक है, सो फाइल सेव के बारे में सबको समझ में आया? इधर यू कैन सेव इट इन वन ड्राइव, क्लाउड में सेव कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव जो क्लाउड है, गूगल ड्राइव जैसा है, ये वन ड्राइव वहां पे वैसा है। अदरवाइज यू कैन सेव इट इन योर लोकल ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो टू आई विल क्विकली वॉक यू थ्रू द इंटरफेस, एक्सेल इंटरफेस। ठीक है, ये जो एरिया को बोलते हैं हम लोग रिबन एरिया, ये जो सारे एरिया को बोलते हैं रिबन एरिया। ठीक है, और ये जो है फाइल है, होम है, माइन टैब, इंसर्ट, इसको बोलते हैं टैब। सो पहले आपका हो गया रिबन एरिया, उसके बाद रिबन टैब या खाली टैब बोल सकते हो। सो इन एवरी टैब you have this you have this okay, this is called groups. Groups में you have command buttons. Okay, group means clipboard group, font group, alignment group, number group, group भीतर एमती आसिବ, right? So you have all these buttons that comes in each and every group. ठीक है, कमांड बटन। सो कमांड बटन में ये सारे बटन आ गए फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, बोल्ड करना है, आइटलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बॉर्डर देना है। नाउ दीज आर दी डिफरेंट यू नो ग्रुप्स वेर यू हैव ग्रुप्स में कमांड बटन्स, ईच ग्रुप हैज सम कमांड बटन्स, करेक्ट? सो रिबन एरिया में टैब है, टैब में ग्रुप है, ग्रुप में कमांड बटन्स है। ठीक है, और ये हो गया आपका रो। ओके, रोज आर रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड इन अल्फाबेट्स ABCD करके। ओके, rows and columns. Okay, so this is called a cell. Cell is an intersection of rows and columns. Row columns में से के cell. Okay, so every cell has a cell address. Okay, now wherever I click, let's say if I click here, now this cell has a cell address that is B3. Okay, this is called a name box which will show you the cell address. Okay, correct? And this is called formula bar. So whenever you write a formula, this is your formula bar.
So suppose I'm writing something equals to, here I'm writing equals to 10 plus 10 plus 30. I'll press enter. Okay. So now you're unable to see the formula. We are seeing the output. You can see the output. So if you click on that particular cell, address will be displayed in name box. And this is your formula bar, which is going to show you what is the formula used in the background. Yeah, background or count formula usage that will be shown over here. Clear? Okay. So this is horizontal scroll bar, vertical scroll bar, scroll करके मैं देख कर या. Okay. So this is called a workbook. This Excel file is called a workbook. Okay. Excel file is called a workbook. In this workbook, you can create multiple worksheets. So if you click on this plus button, so it will create new worksheets. Suppose I want to maintain January details in January sheet. I want to maintain February details in February sheet. Okay. March detail in March sheet. Okay. April detail in April. Either I can right click, rename. Okay. It's May. Or I can just double click. Double click means it will be selecting the sheet name. There I can type whatever name I want. Okay. So clear? Yes. So this area is called. So this is status bar. So I'll show you whenever we'll work on Excel. It will show you some values. We'll discuss that time. Okay, status bar. Then in a cell, what you can do is, I'll tell you, in a cell, right, what we can do is first we can enter a value. Okay, we can write or write a formula. We can apply formatting. Right? Either we can enter some value, we can write a formula, we can apply format. That means what? I'm entering a value. Okay. If I want to apply formatting, select background color. Okay. Font color. Okay. Bold, italic, underline. Okay. If you want to change the text also, you can change the font type. This is called font type. You can change the text, whichever you want. Okay. One more thing I'll tell you. And you can also write formula, apply formatting, write a formula. I've shown you how to write a formula. Every time you write a formula, you have to start with equals to 10 into 2, 20. Okay. So Excel supports 3 data types. That is formatting. Excel supports 3 data types. Okay. So one is text, number, Boolean value. Okay, text, number, Boolean value. So suppose I'm writing number. So can you see any difference between these three? Okay, so text values will always be aligned to left side. Okay, number will be aligned to right side. Boolean value either in center, true or false, that will always be in center aligned. Okay, so and Boolean value comes after comparison. If you perform a criteria check, you will get this Boolean value. Suppose I'm writing equals to 10 greater than 20. True or false? False, right? Yeah, false. Equals to 20 greater than 1. True or false? Okay. So when you check a condition, you will get either true. In result, you will get either true or false. So that is called a Boolean value. In some of the programming languages, it is
represented in 0 and 1. 1 means true, 0 means false. Okay. Sometimes T and F. T true, F false. Right. So true, false or 0, 1. In SQL, it is 0, 1. Okay. We create a simple progress report. Whatever basic formatting I'll explain you today, from tomorrow onwards, I'm not going to explain. Because I'll be focusing more on this formula functions part, so that these are very important for data analysis, not this. We are not going to be a data entry operator, okay? Annual progress report. ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକେ quickly ମୁଁ explain କରିଦେବି. Okay. Annual progress report. This is, let's say, name. Okay. Address. Okay. Math. English. So now, suppose I want to give border, okay? So select करो all borders. Okay. So now this header is not looking correct. It should be in the center, right? Center रहेगा दरकार. So merge and center. That means it will merge all the cells. Merge and center. Bold. Okay. If I want to give a background color, I can give a background color. Now I should also bold this. Okay. ठीक है. So if you press Control Shift right, okay, Control Shift right arrow, it will select the entire row. Control Shift right arrow, okay. Control Shift right को you have to press everything together, okay. गोटे थोड़े के press करियर अच्छी. You cannot say आगे Control then Shift then right. Control Shift right you have to press together, okay. So it will be selecting the entire row. If you will press Control Shift down arrow, देखो, it is selecting the entire column. Okay, J पर्यंत data ଅଛି. Okay, used range पर्यंत. So the used range is this column. Here used range is this row, right? So Control Shift down arrow will be selecting the entire column. Control Shift right arrow will select the entire row. जी जानी पाऊँ I will show you quickly. Okay, you have to press Control Shift and this right arrow. Okay, keyboard you have Control Shift, right arrow. Okay, so this will select the entire row, and Control Shift down arrow will select the entire row. सिंगल बाय सिंगल तो मैं ये करो शिफ्ट प्रेस करके ओके शिफ्ट राइट एरो देन शिफ्ट डाउन एरो ओके shift down arrow. You can otherwise select it in mouse also, drag करके and drag it down. You can drag towards right by pressing left button. Okay. So before joining this course, this is I mean assume that you know how to operate mouse and keyboard.
Okay. So now I will use a formula to populate the values. If I type, let's say there is another subject. Okay. Okay. Another subject. There are like 5 subjects. Okay. If I just keep on typing, it will take a lot of time. So I will use a formula. You may not understand it today. Later I'll explain it. Just I will randomly generate some values. Okay. कितना रो अच्छे हमरो 1 2 3 4 5 6 7 7 रो कितना कॉलम अच्छे 5 राइट marks 5 columns. I want marks between 50 and 100, 50 and 90. I need marks. Okay. Integer. I will explain you later. Margin center. You can select everything. All border. Done. That function I'll explain you later. Okay. That function, once again, I'll tell you. Once I'll tell you now, then later, if you don't understand, then see. Okay. So this is a function actually which will randomly generate values. RAND random array. Okay. RAND ARRAY random array. See. Tab karo. How many rows we want to populate the value? 7 row. 7 row. Okay. 7 row, comma. How many columns? We have 5 columns. Math, computer, English, history, geography. Okay. 5 columns. I want to randomly generate marks between 50 and 100. What is the minimum mark? 50. Let's say maximum is comma 90. Okay. Last one, it is saying you want to generate whole numbers or decimal numbers. Okay. Dasmik sankhya na whole number. Okay. So integer means whole number, decimal means dasmik sankhya, right? So I will select TRUE. I can either mouse re select karibe, I can write it. True. Okay. Close the bracket, enter. So all the marks which are generated over here between 50 to 90. Clear. This function will later understand. So everyone understood, right? So this is called, when I'm clicking, this is one cell. Okay. But when I'm selecting this, so this is called a cell range. Hello. Selecting individual cells are, it is showing me the address. Now, if I'm selecting this area, so this is called a cell range. This cell range is, I will just highlight in some other color. Cell range is C3 ru neki kete E7. Correct? This is a cell range. See, it starts from C3 E7. So how it is represented? C3 colon E7. This is called a cell range. Correct? Cell range means group of cells. Let me write total marks here. Okay, total marks. Let me change no fill. Okay. So I want to add all these numbers. Okay, 84 plus 69 plus 82 plus 60 plus 84. Correct? 84, 69, 82, 60, 84. Enter. 379. Correct? Yeah. So for second one, I'll write equals to 77. So what's wrong here? I'm writing correct, right? What is wrong? 84. ये Excel जानते हो ऐसे कोई सर कौन है? So guys, what's wrong here? I'm writing everything correct, na? So we can Online. use formula over here. I should use a formula. If I don't use a formula, what is the issue? It will take too long for.
Sorry, Take to do the. Karishma? It will take too long to do the task. Yes. Okay. So first thing is, when I'm writing a formula where I'm using these values, these are called hard-coded values, fixed values I'm using. Okay. For writing one student total mark, for writing a formula to achieve one student total mark is fine. But when I have 1 lakh students, is it possible to write like this? No. Not possible, right? So you should not be, you should always avoid writing like this. This is called hard-coded or fixed value. And the biggest problem over here is, if there is a correction to this mark, which is 99, right side it should change, right? 379 should be updated. Now it is not updating. Okay, because I'm not referring to this cell, I'm using a hard-coded value. Even if I'm changing even if I'm changing this marks, it is not going to be reflected over there. There is no link. So ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ programming concept ରେ କୁହନ୍ତି, this is called hard coding or writing a fixed value. Okay, ଆମେ ୟାକୁ dynamic କରୁନେ. Yes. So if I write a formula like, maybe if I use a cell reference, I'm not discussing about sum as of now. We will discuss it going forward. But so I'm not writing this values hard coded. I will refer to this cell, which is C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus E3. Okay, enter. Okay, if I'm changing anything here, I'm just changing it to 30. 349 change. Okay, I'm changing it to 12. Now this is also changed. And the best part is, once you write the formula, you can just you can see here. Sir, double click. I can double click here. I can drag. Okay. Those who don't know, so select karo. Okay. Cell ro bottom right corner re gote plus bale aସୁଛି. Okay. You can see this. This is called fill handle. You can just drag it down. That is one way of doing it. Or you can simply copy, Control C, then select other cells, Control V, paste. Or you can just double click here. It will be filling all the remaining rows. Either there are other formulas also. I don't remember. You can, if you want to explore, you can explore that. So I told you 3 things: copy paste or you can drag it down, or you can double click, which will be filling the remaining rows. Okay. So this is called automatically you are writing, instead of hard coded values, you are referring to that particular cell so that you can achieve this quickly. Okay. So does it हम C3 या D? Good question. I'll come to that. So there you can take a cell range. You can use a formula. For example, so Control C here. So this is my, suppose these are my subject marks. I want a total, say, remove select colli. Okay, there is something called auto sum. Auto sum rahijibo. So auto sum background, what is happening over here is auto sum function is used, and here it is using a complete range. Okay, that way you can do it. So see, when I'm writing sum, I can pass individual range also. This also I can pass. Starting and ending. This I can pass. Or if you want to, this is called cell reference, individual cell reference. If you want to pass the entire cell range, you can select this. Select B13 to B19. Okay, enter 520. Okay, you can either you select it, or if you know the range, you can write it directly. You can write it directly also. You don't need to select it. If the range is very big, you want to just type it to fill the range. Starting part, colon, ending part. This should be in this structure. Error. Okay, that should be colon in between. Colon. Okay. So equals to sum. I can add easy. Suppose I can add any number also. Okay.
So this is sum is called a, see, when I'm selecting a range, so it will colon, it will use A7 colon A13 or B13. Okay. But if you want some individual numbers to suppose manual kichi calculation kore achi, okay, tinta number ko I can write like this, or I can use this method. But 99% you will not be using this. You will always use a cell reference or cell range. So cell reference, cell range is clear to everyone. Okay. Now I will, so just I'll give you a background. The sum which we have used here, that is called a function. Formula means A jota me manually lekhuche, C3, D3, E3 plus kuche. But there is something called sum. Sum bhitar we are passing, inside sum we are passing B13 to B19. So this is called a function. So function, it is a pre-written code. See, if you see some function, we are passing any number, it is adding and giving us the result. So in background, there is someone who has written algorithm or code behind sum, which is taking care of everything. If you pass the numbers, it is taking care of that and adding more. If you pass the cell reference, it is adding. If you pass the cell range, it is adding. That means there must be some logic or some code must be written inside sum. Sum is a function. That means there is some pre-written code inside it, and we don't have to worry. We are not going to see that pre-written code. The person who has developed developed Excel, so they would have, that team would have written this. Okay, so that is called a function. Every function you should remember. Every function should take some input, will give you some output. For example, okay, so some function here. This is function name. Okay, these are the inputs. This is input 1, input 2, input 3. And what is the output we got? 60. This is output. Okay, this is output. So every function will take some input and will give you some output. Simple. That is the use of a function. Okay. So input ko we call it as argument. We call it as parameters. Some people may name it as arguments. Some people may name it as parameters. Okay, that is the same input. Okay. For example, you want to withdraw cash from an ATM. Okay. Cash you want to withdraw. So to withdraw cash, what are the inputs you need? First is your card, then PIN, amount. Okay. Output is what? Cash or receiving money. That is your output. Similarly, if this is a function, now this function takes three parameters. This can be this 10, 20, 30, or it can be a cell range, or it can be a cell reference also. So it will give you the output as 60. So this is called result of that particular function or output of that particular function. Okay, input and output. And it is not mandatory that every function will take some arguments. Function design upar depend kare. Now the function is designed in such a way, it will take 2 parameters, it will take 3 parameters, it will take 10 parameters, but there are some function which may not take any parameter, will give you the output. For example, if you want to see the date here, okay, so if I want the date here, I can write today, EODAY. This is also a function, but which is not taking any input. Okay, so, but you have to give the starting bracket and the closing bracket. Enter. It is giving you today's date, 23rd June 2025. Correct.
This function doesn't take any arguments, inputs, but it is giving you, because argument number point in because the function is designed to show you the current system date. So what is the point of taking an argument? Suppose I want to extract year from this particular date. I will write year function. There is a function called year. Now this function will take the date. Date nele to set complete it. If it takes the complete date, then it will extract the year from. So non year केमती बात करियो. Okay. So suppose I'm passing this F15. So F15 contains the complete date. Now year is fetching 2025. So year function extracted year from a complete date, which has date, month, year. So we'll come to this function. Date function will start from scratch. Okay. So everyone understood? Online? You guys are not actively participating. What is the issue? Yes, sir. So आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. अभी प्रिंस रहता था ना, तुम लोग को क्वेश्चन ही पूछने नहीं देता था, ठीक है? जो नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, ठीक है? So सबको समझ में आया? Sir, I have a doubt. Yes. Sir, if we write the range in means hello? हाँ हाँ बोलो. Yes, sir. If we write the range to calculate the sum, then can we copy the range to other cells? See Means what will for the happen. entire column. See, I'll tell you that concept we are going to cover tomorrow. Okay, so that is Yes, called sir. absolute cell reference and relative cell reference. So we can definitely see. Today it will confuse you. So maybe next class I'll discuss this. Okay, so Okay, sir. this is called, I'll tell you, there is a function which is name is formula text. Okay, formula Yes, text. sir. So this function will extract the formula that is used here. Okay, H3 I'm selecting, enter. Yeah, background कौन formula H, this is going to show you. Okay, so just Yes, I'm sir. dragging it down. Okay, so now this is called relative cell reference. Tamane, whenever we are copying and pasting the formula, automatically it is taking the cell reference, right? It is not taking the first cell reference and calculating this one. See, problem is here, but here you can easily understand, right? Here you can see that when I'm just dragging this down, so it is not taking the reference of C3, D3, A3, F3, G3. It is taking the reference of this file. Okay. So again, right? If I'm just copying it down, it is 0 because it is taking the 5 adjacent, Purva 5 adjacent cell reference it is taking, right? So this is called relative cell reference. Automatically it is taking the related cells. If I just copy this, paste it here, 0, because it is taking this 5 cells reference. If you see here, K ru O thivo. So when you copy paste the formula, okay, it will take this relative cell reference automatically. Okay, so accordingly, if you, Karishma, if you copy this, even if you give a range and you are trying to copy it, automatically it will take other cell references also, depending on where you paste. Got it? Okay, sir. But suppose manually, if you are selecting, it doesn't matter. Suppose I'm saying sum, okay. This is manual selection, right? Bracket Yes, close. sir. It is adding. So here you want to find the sum. Again, again go for manual selection. Close the bracket. Okay. Either you can do manual selection. But if you just copy this and paste, see now it is taking C3 to F7. If I'm copying, reference error, C3,
because it is not finding the reference. Correct. I3, L7. Okay, randomly it is taking. Okay. I'll tell you one more thing I'll tell you. So why you got the reference error? Equals to sum. Clear? 279. Control C, multi paste koli. I'm getting reference error because it is looking for the 5 previous cells. 89, huh? Got it? That is the reason you got reference error. Okay. Guys, did you learn anything new or you already knew this already? कुछ नया सीखने को मिला? आज बेसिक ही था. Most of you would have already learned it. So सेल रेफरेंस हम लोग कल फिर से कवर करेंगे. सेल रेफरेंस हो गया. दो टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं. बेसिकली one is called relative cell reference. Another one is called absolute cell reference. Tomorrow we are going to repeat this relative and absolute. Okay. ये कोई नहीं पूछने वाला. ये जो क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, these are all basics. मैं फाइल शेयर करूंगा आपको. अगर ये फॉर्मेट वगैरह प्रैक्टिस करना है ये कर सकते हो आप लोग. ये अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस. सो फॉर्मूला टेक्स्ट मतलब ये पर्टिकुलर सेल के बैकग्राउंड में क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, जस्ट टू शो यू. तो सो दैट हम लोग इजीली समझ पाएंगे. मैं कितना ही बार क्लिक करके आपको फिर दिखाऊं. यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिखाऊंगा C3 से G3, फिर आई हैव टू क्लिक हियर, फिर बट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस. उसका और कुछ यूज नहीं है. फॉर्मूला टेक्स्ट मतलब फॉर्मूला जो यूज हुआ है एक सेल के बैकग्राउंड में, उसको जस्ट शो करो. एनी क्वेश्चंस गाइस? आज कुछ क्वेश्चंस है? तृप्ति, शेफाली, प्रीतिश, पूजा, मधुस्मिता, करिश्मा, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है? सब कुछ समझ में आया? ऑल क्लियर? Yes, sir. Okay, then next class we will complete the cell reference. Then we'll start with functions. Functions कैसे यूज करते हैं, functions start करेंगे. Day after tomorrow. Day after tomorrow, maybe Wednesday, Thursday we'll have class. Then continuously. Friday, therefore, if you can digest, then I can continue on Friday also. I don't mind. Right. Close करेगा. बुझिएला सब. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me stop recording. Command prompt. Excel version. You can see it here. No? Help. There is something called Excel about. Command prompt. Let me. करो तो कौन ऑप्शन? MS Office is not. तो मैं Excel रे ही जानी परिबो. Which version you are using? Center. Right. I think ना ଟିକେ कॉम्प्लिकेट कर देइछि. 80 आसिया कथा एक्चुअली. हेल्प अबाउट अस रे आसिया कथा. स्टॉप. ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି. ହଁ ସେମିତି ଦେଖା ହଉଛି. ବଟ୍ କମାଣ୍ଡରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ନ ଆସି ପାରେ.